Assalamualaikum, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और खैर आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है ऑन यूट्यूब। सो कमेंट में सजेशन आई थी फॉर 12 ट्रेड इन्वेंशंस वी शुड थैंक्स टू इंडिया। सो आज इस पर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में इंडिया को थैंक यू कहना चाहिए या फिर थैंक्सफुल होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। सो आई होप कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। Hey, 12 great inventions we can thank India for. We all know that India is one of the oldest civilizations in the world, with a super rich culture and history. But did you know that some of the stuff you use every single day was invented in this country? From the buttons on your shirt to the shampoo in your shower. Watch this video till the end to find out what brilliant things we can thank India for. Oh, and don't forget to subscribe to our channel and turn on post notifications to keep up with our updates. Alright, number 1. The zero. People in ancient times had always thought that there should be some sort of a sign to indicate nothing. Well, their worries were put to rest in the 5th century AD, when Aryabhata, an Indian genius of math and astronomy, invented the zero as a symbol to represent nothing. It made addition, subtraction, and a slew of other mathematical operations a whole lot easier. You can see the oldest zero in existence carved in the wall of a temple in Gwalior, India. If you're not a big fan of math and the invention of zero seems like nothing too important to you, just think, without it, we would have no binary system and no computers. How do you like that zero now? Number 2. Rulers. The Indus Valley Civilization was using rulers in 1500 BC and earlier. Made from ivory, these rulers were found during excavations in what is present-day Pakistan and northwestern India. Apparently, they were widely used in architecture with pretty amazing accuracy. They had units corresponding to 1.32 inches that were marked with extremely precise subdivisions within 5,000th of an inch. Number 3. Chess. This all-time top game for intellectuals is also an Indian invention. Its ancestor was called Chaturanga, and it was a strategic board game popular during the Gupta Empire around 6th century AD. Like the chess we know today, this game had various pieces with different value and capabilities. It also had an important king figure, and winning the game depended on the fate of the king. Another popular board game brought to us by India is Snakes and Ladders. The original version was called Mokshapat, and it was invented by a 13th century poet and saint by the name of Gyandev. The snake stood for vices, while ladders were virtues. During India's time under British rule, the game made its way to England and later to the US. Number 4. Plastic surgery. In the 6th century BC, an Indian physician named Sushruta created a huge reference book on medicine and surgery. It was one of the world's earliest works of its kind. Sushruta, often called the father of surgery in his home country, described the use of hundreds of medicinal plants and instructions for performing surgical procedures, including nose reconstruction and skin transplantation from one part of the body to another. The original method of rhinoplasty that involved taking a piece of skin from the forehead to reconstruct the nose is even still used today.
But back then, nose jobs were done to help people who had been deprived of their noses as a punishment for theft or adultery. Ooh, how times have changed! Number 5. Cataract surgery. Sushruta not only invented plastic surgery, but also performed the first cataract surgery. He used a curved needle to remove the lens from the affected eye. This revolutionary procedure soon became popular outside of India. Patients and doctors from around the world visited the surgeon to get operations done and learn from his experience. The genius surgeon never turned anyone away. He said that he got all his knowledge from the god of Ayurvedic medicine, Dhanvantari. Number 6. Wireless communication. When you think of the pioneer of radio communication, Guglielmo Marconi probably immediately comes to mind, and that's for good reason, of course. He even received the Nobel Prize in Physics in 1909 for his innovative work. But Sir Jagdish Chandra Bose presented his discovery of radio communication waves to the public in 1895. He sent an electromagnetic wave across 75 feet at the town hall in Calcutta. The wave passed through walls, rang a bell, and ignited some gunpowder. Marconi used Bose's invention, the mercury coherer, as a pattern to build his operational two-way radio. Bose never patented his work, so he was only credited for his discovery a century later. Number 7. The USB. The USB, or Universal Serial Bus, is a way more recent invention than wireless communication, of course. It was brought to us by Ajay Bhatt, an Indian-American computer genius that was working as an engineer for Intel back in the 1990s. He came up with the idea of a universal port for devices, as he was putting an SD card into his computer. Remember those things? The device instantly became a huge hit. Bhatt himself didn't get money or official recognition for his invention, as he's always insisted that it was the result of teamwork. Today, the amount of USB devices used worldwide is over 10 billion items, making it the most used computer gadget out there. Number 8. Yoga. Hit that like button if you've ever tried yoga. I have. If you keep practicing it and see the positive changes in your life, then you should thank India for it. The first yoga guru was Lord Shiva, also known as Adi Yoga. People in northern India were practicing this spiritual exercise over 5,000 years ago. The word yoga was even mentioned in the Vedas, India's oldest sacred text. The Brahmins further developed the art of yoga and documented their experiences in a treatise with over 200 records. Indian Prime Minister Narendra Modi came up with the idea to celebrate Yoga Day on June 21st, and it's now an actual international holiday with millions of followers. Number 9. Natural fibers. Nothing feels better than the touch of natural cotton on your skin. We could have been deprived of this situation if it weren't for the bright minds of India. Unlike the ancient Greeks, who wore animal skins, the Indians started cultivating cotton back in the 5th and 4th centuries BC. They used cotton threads to produce fabrics that soon became a huge hit in the Mediterranean and beyond. Jute and wool also have their origins in India. Cashmere, the finest and most exclusive type of wool, actually comes from the Kashmir region of India. Number 10. Flush toilets. You can probably see by now that the Indus Valley Civilization came up with so many genius inventions. And flush toilets were one of them. Believe it or not, home toilets connected to a complicated sewage system with canals, irrigation, and smart water management existed in the land of spices over 5,000 years ago. Pure genius. Number 11. Shampoo. The word shampoo comes from the Hindi word shampoo, which means to massage or knead. The substance was invented in India in 1762,
and was originally used for head massages, hence the name. The first shampoo was made of natural oils and herbs. British colonial traders fell in love with the idea and brought it back with them to England. It took years for the original head massage oil to evolve into shampoo as we know it today. But fact is fact. You have the Indians to thank for the beauty and cleanliness of your hair. Number 12. Buttons. This clothing staple is at the top of our list. So simple yet revolutionary, the first buttons were found during excavations in Mohenjo-Daro, one of the largest settlements in the Indus Valley Civilization, yet again. Over 5,000 years ago, buttons were made of seashells and used as an ornament and not for fastening clothes. But they had 2 holes in the middle right from the start. So, are there any inventions on the list that you can't live without? Let's discuss it in the comment section. Be sure to hit like and share this video if you found it useful. And if you're new here, subscribe to our channel to not miss any of our cool updates. Remember, life is always better on the bright side. वाओ अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग सीरियसली गाइस, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इंडिया इतनी सारी चीज़ें जो हैं वे इंडिया ने इन्वेंट की हैं। बेसिकली मुझे इतना आइडिया हुआ था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा था कि वायरलेस जो वाईफाई है, मतलब वाईफाई जो है वो इंडिया की ही एक देन है, इंडिया ने ही वाईफाई को इन्वेंट किया था। बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि इंडिया में मतलब कि द ज़ीरो, रूलर्स, चेस, प्लास्टिक सर्जरी, आई मीन रियली प्लास्टिक सर्जरी, मुझे लग रहा था ये गोरों की कोई इन्वेंशन होगी, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी इंडिया ने बनाई है, मतलब इंडियन ने ही, इंडिया से स्टार्ट हुआ है। सो इसके पीछे भी किसी इंडियन का ही दिमाग था। सो ये बात मेरे लिए एक मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा न्यू है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ की कैटरेक्ट सर्जरी, मतलब कि यार कैसे दिमाग, आंखों की सर्जरी, लेंस को चेंज कर देना, लाइक मजाक नहीं है ये, कैसे, मतलब वाकई में हर चीज़ में इससे आइडिया हो रहा है कि इंडिया कितना आगे है हर चीज़ में। और हम बात करें यूएसबी की, वायरलेस कम्युनिकेशन, एज हमने जैसे पहले बात की थी, यूएसबी की बात कर लें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि योगा है, योगा 21 जून को इसका डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो यार योगा को हम, मतलब कि एक इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बॉडी उनकी एक्टिव रहती है। सो ये ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में किया जाता है और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। सो एक बहुत अच्छी एक चीज़ है ये, एक्सरसाइज टाइप है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक सीरियसली इंडिया, योगा चलो ठीक है, हाँ इंडिया का था, ये तो मुझे आइडिया है। बट अगर हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की, फ्लश टॉयलेट्स, मतलब कि जो टॉयलेट्स के नाम पर इतना इंडिया को इशू बनाया जाता है कि इंडिया में वॉशरूम्स नहीं है, ये है वो है, लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं मैं उनको यही कहूँगी कि यार ये वीडियो देखो, टॉयलेट का जो फ्लश का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो इंडिया ने ही किया है। इट्स मीन कि इंडिया इन चीज़ों में कितना आगे है और हम अब तक उन पुरानी वक्त में ही चल रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट इंडिया कि आप लोग वाकई में इस पे आप लोगों को थैंक्स कहना चाहिए और हमें भी थैंक्स कहना चाहिए टू इंडिया कि लिटरली इतनी अच्छी इन्वेंशन की है। और ना सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ कंट्रीज में हर कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है और विदाउट एनी कॉस्ट। और अगर हम बात कर लेते हैं शैम्पू की, सो मेरे आज के जो बाल हैं, मतलब लाइक इतने जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसके पीछे इंडिया की ही मेहनत है, मतलब इंडिया का दिमाग है। लाइक सीरियसली यार, इंडिया वालों ने ये शैम्पू इजाद किया है। मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि इंडिया की इन्वेंशन है ये शैम्पू, मतलब कैसे यार। अच्छा खैर, बात करते हैं बटन्स की। तो ये जो बटन्स होते हैं शर्ट्स में, सो इसके बगैर तो इंसान की ड्रेसेस अजीब से हो जाएंगे। लाइक कोट हो गया, जीन्स हो गई, जीन्स तो बिना बटन के हम वेयर ही नहीं कर सकते। तो वाकई में यार हमें थैंक्स कहना चाहिए कि इंडिया ने इतनी
इन्वेंशंस की हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं जिससे हमें ये नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ों से जो है ना फ़ायदा उठाया जाता है। सो मुझे ये 12 जो इन्वेंशंस हैं ऑफ इंडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और मुझे नहीं आइडिया था, मुझे 3-4 चीज़ें पता थी लेकिन इतनी सारी चीज़ें मुझे आइडिया नहीं है। इवन तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया के साइंटिफिक, इंडिया की हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट है। सो ये चीज़ें तो मैंने नॉर्मली देखी हैं, इवन दो दुबई में भी देखी हैं। सो मुझे अच्छा लग रहा है कि इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और कमेंट में बताइएगा कि और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिस कर दी गई हैं और जो कि इंडिया की इन्वेंशन है और हमें उसको देखकर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग इस तरह की वीडियो मुझे सजेस्ट करते हैं, और भी ज़्यादा वीडियो इस तरह की सजेस्ट करें ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। सजेस्ट देखो, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी फॉर मी स्पेशली, और जो लोग ज़्यादातर लोग देखते होंगे आउट ऑफ कंट्री से, सो मतलब इंडिया से अलग लोग जो देखते हैं, सो उनके लिए बहुत मतलब नॉलेज की चीज़ है ये कि क्या क्या चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं जो हमें इतना फ़ायदा देती हैं, बेसिकली वो चीज़ें इंडिया ने बनाई हैं। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी है। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और यस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।